am going to teach you book Hornbill, chapter 4, Landscape of Soul, and today I am going to teach you part 1. So, look at about the lesson. The lesson Landscape of Soul was written by the Nathalie Hornbill, and in short, I explained that the Landscape of Soul, this chapter is divided into two parts. The first part is Landscape of the Soul, Ethics and Spirituality. Ethics and Spirituality, it explained about the Chinese painting which was written by किसके द्वारा लिखा गया है? Nathalie. And the second part is Getting Inside Outsider Art, which was published in Hindustan Times 2005, and it was written by the Brinda Suri. Okay, I explain you again that the chapter is divided into two parts. Nathalie is the writer of this lesson, and the author takes first part, Landscape of the Soil, Ethics and Spirituality, and it gives the explanation of the Chinese painting, and the second part, which is Getting Inside Outsider Art, it was published in Hindustan Times in 2005, and it is written by the Brinda Suri. So this is about the lesson. Now come to the theme of our second point is theme of the lesson. Okay, what is the theme of the lesson? The main theme of the lesson is about the arts. The whole story revolves around the arts of the Chinese painters, and the story is told with the various stories, and we learn about the Chinese painters, their work, and as well as the story behind. While the second part, in the first part we learn about the Chinese painter, and in the second part, what is the theme of second part? In the second part, explore the concept of art, drug. It gives the concept of art drug. Now, what is the meaning of art drug? Art drug meaning the art of one who have no rights. Okay, so in totality we can say we learn a great deal about the art and its history. कहने का मतलब ये है, फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे कि मैंने आपको एक्सप्लेन किया अबाउट द लेसन कि ये जो लैंडस्केप ऑफ द सोल है, इसको दो भागों के अंदर डिवाइड किया गया। आपका जो फर्स्ट पार्ट है वो है लैंडस्केप द सोल, एथिक्स एंड स्पिरिचुअलिटी, जिसको नथालिया ने लिखा, और जो सेकंड पार्ट है वो है गेटिंग इनसाइड आउटसाइडर आर्ट, जिसको किसने लिखा? ब्रिंदा सूरी ने लिखा। और ये जो गेटिंग इनसाइड आउटसाइडर आर्ट जो था, ये हिंदुस्तान टाइम्स में 2005 के अंदर ये पब्लिश भी हुआ था। नाउ our second point is theme of the lesson. What is the theme of the lesson? So the theme of the first part, this is the part first. It is part first and it is the part second. So what is the theme of part first? Part first के अंदर थीम क्या है? पार्ट फर्स्ट की जो थीम है वो पूरी आपकी जो चाइनीज जो पेंटर्स हैं उनके बारे में है, और ये पूरी बहुत सारी कहानियों के द्वारा
थे जिनको वन हु हैव नो राइट, जिनके पास उसका अधिकार नहीं था, वो आउटब्रेड होते थे। तो ये हमको सेकंड वाले पार्ट के अंदर करना पड़ेगा। इन टोटलिटी अगर हम देखें तो हम पूरे लेसन के अंदर जो चाइनीज पेंटिंग है, चाइनीज आर्ट है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। ओके, नाउ कम टू द समरी। द थर्ड पॉइंट इज समरी। Summary of part first. Today in this class, I am only explain you the part first. मैं आज आपको केवल part first ही explain करूँगी. Now come to the summary of part first. 18th century painter. 18th century. Sorry, I love it. Here are some characters in part first. Okay. Part first, I will give you landscape. Landscape of soil. Ethics and spirituality. Okay, this is your part first. First story जो हम इसके अंदर पढ़ेंगे वो क्या है? 18th century painter Wu Daoji. This is the story about Wu Daoji. Wu Daoji. Okay. In 19th century, Wu Daoji was asked by the 10th emperor Zhuang. He was asked to make a painting for a wall. Wu Daoji को 10 के जो महाराजा थे एक्सोंग, उन्होंने उसको एक दीवार की पेंटिंग बनने के लिए बुलाया था. The painter hide. The painter, who is the painter? Wu Daoji. He is the painter. The painter hide the painting and he kept it secretly. Only the emperor can see the painting. उसने अपने पेंटिंग को हाइड करके रखा, छुपा के रखा. केवल जो एम्परर था, टैंग का जो एम्परर था, वो केवल उस पेंटिंग को देख सकता था. And the painting was painted very beautifully. It depicts the mountains, the beautiful environmental surroundings, the man on path, the flight of the birds, rivers, many things. उसने अपनी पेंटिंग में हर चीज को, हर प्राकृतिक दृश्य को बड़े ही सुंदरता के साथ दिखाया. And when the painting was completed, the emperor was very impressed by his art. जो राजा थे वो उसके आर्ट से बहुत ज़्यादा इम्प्रेस्ड हुए, बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए. And at last, then the painter asked the king respectfully to see, to look in a cave which was in the foot of the mountain. होता क्या है कि जब पूरी पेंटिंग रेडी हो जाती है और जब किंग भी उस पेंटिंग को देख लेता है, तो जो पेंटर वू दाओजी थे, उन्होंने राजा क्या कहा? He asked him to look at the cave which was at the foot of mountain. कि जो मैंने उस माउंटेन बनाया है पेंटिंग के अंदर, उसके नीचे में एक केव है, आप उसको ध्यान से देखिए. He also told him that there was a spirit in the cave. उन्होंने बोला कि इस गुफा के अंदर एक आत्मा है. And the painter clapped. As he clapped, the door of the cave opened, and he says that the cave is very splendid inside. He wants to go there. वो जैसे ही जो पेंटर क्लैप करता है, वो अपने आप उस पेंटिंग में, जस्ट इमेजिन कि एक पेंटिंग है, पेंटिंग में से कैसे दरवाजा खुल रहा है, तो वो जो उसने पेंटिंग बनाई, उसने क्लैप किया और क्लैप करते जो गुफा थी, गुफा का दरवाजा खुल जाता है. वो राजा को बोलता है, उस एम्परर को बोल रहा है, एम्परर उसके साथ है, वो एम्परर को बोल रहा है कि देखिए कितना सुंदर, कितना स्प्लेंडेड ये अंदर गुफा है. एंड by saying these words, he entered into the cave. As he entered into the cave, the entrance of the cave is closed. और जैसे ही पेंटर उस
पेंटिंग के अंदर घुसता है तो वो जो गुफा होती है वो गुफा अपने आप बंद हो जाती है। बिफोर द एम्परर मूव और आस्क्ड अ वर्ड, ही वाज फॉर हिज सरप्राइज द पेंटिंग इज वेनिस्ड फ्रॉम द वॉल। और इससे पहले कि राजा कुछ बोलता या कुछ कहता, वो जो दीवार पर जो पेंटिंग लगी थी अचानक से वो पेंटिंग वहां से गायब हो जाती है। दिस वाज द लास्ट विजन ऑफ द पेंटर वुडाउजी। वो अंतिम समय था जब पेंटर वुडाउजी को किसी ने देखा एंड द पेंटिंग वाज द लास्ट विच वाज मेड बाय द डोबाउजी। मतलब आप समझ सकते हैं कि कितना वो कलाकार कैसा रहा होगा जिसने बिल्कुल रियल पेंटिंग बना दिया। उसने अपनी पेंटिंग में बहुत सारे प्राकृतिक दृश्य बनाए, उसके बाद उसने अंदर एक गुफा बना दी और ऐसी गुफा बनाई कि वो हमेशा के लिए उस गुफा के अंदर चला गया। दिस इज द रियल आर्ट। नाउ कम टू द सेकंड स्टोरी। The author tell another famous Chinese story. It is also a Chinese story. What happened in this story? In this story, a Chinese painter made a dragon, and he didn't make his eyes. उसने एक ड्रैगन की पेंटिंग बनाई और उस पेंटिंग के अंदर उसने आइस नहीं बनाई। Why it is so? Because he was afraid that the dragon was fly from the painting. उसने अपनी पेंटिंग में आइस सिर्फ इसीलिए नहीं बनाई क्योंकि उसको डर था कि अगर वो पेंटिंग के अंदर आइस को बना देगा तो वो ड्रैगन उस पेंटिंग से उड़ के चला जाएगा। आप सोच सकते हैं कितना जादू है, कितना तिलिस्म है। आपको बहुत सारी स्टोरीज, नॉवल या ऐसे सीरियल्स आपने देखे होंगे जिसमें ऐसे चमत्कार, ऐसे अद्भुत चीज़ों को, सुपरनेचुरल चीज़ों को दिखाया जाता है। अभी फॉर एग्जाम्पल इफ यू सी द यूट्यूब्स और FB, आपने देखा होगा कि बहुत सारे वीडियो वायरल हो रहे हैं जिसके अंदर सुशांत सिंह की आत्मा से बात करते हुए दिखाया। तो मैं नहीं बोलती कि इट इज ट्रू और नॉट, वो सही है या नहीं है, लेकिन दिस चैप्टर इज बेस्ड ऑन लाइक दिस थ्योरी। ये चैप्टर भी लगभग उसी थ्योरी की तरह है। अब इसके अंदर वो बोल रहा है कि उसने ड्रैगन बनाया लेकिन ड्रैगन की आइज नहीं बनाई। आइज क्यों नहीं बनाई? क्योंकि उसको लगा कि ड्रैगन वहां से पेंटिंग से उड़ के चला जाएगा। सो दिस इज द अदर स्टोरी एंड all these stories played an important role in the traditional education. They help the master to give a guideline to his disciple in a right direction. ये जितनी भी कहानियाँ हैं, ये माना जाता है कि चाइनीज के जो पेंटर हैं ये उनकी ट्रेडिशनल कहानियाँ हैं और इस कहानी से वो अपने आने वाले जो पेंटिंग जो करने वाले होते हैं उनको एक सही दिशा देते हैं, सही ज्ञान देते हैं। एंड दिस स्टोरी रिवेल द स्पिरिट। ये जो जितनी भी स्टोरीज हैं उसके अंदर स्पिरिट को दिखाया गया है, किसी न किसी आत्मा को या भाव को दिखाया गया है इन विच द आर्ट कंसर्न। और ये भी बताया गया है कि इन आत्माओं से या इन जो चमत्कार हैं या जो भी माने इसको, जो रिलीज है, इसके अंदर कहीं ना कहीं कला जुड़ी हुई है। नाउ द थर्ड स्टोरी। व्हाट इज आवर थर्ड स्टोरी? इन द फर्स्ट स्टोरी आई explain you about Wu Daozi. In second story is about also a Chinese story, and the third story, the writer then compares this story to an old story from his own village Flanders. Okay, जो अब हमारे जो नज़ारिया है उन्होंने वो कहाँ की रहने वाली? फ्लैंडर्स की, और इन दोनों स्टोरी को उसने अपनी फ्लैंडर्स की स्टोरी से ही ऐड किया है। इन 15th century Andret a skilled blacksmith. It is the story of a blacksmith. उस ब्लैकस्मिथ का नाम क्या था? क्वेंटन मैक्सिस। क्वेंटन मैक्सिस। Okay, this is the story about a blacksmith named Quentin Maxis, and he is a very skilled in his work, but he fell in love with a painter's daughter. ये जो ब्लैकस्मिथ है ये अपने जो लोहे का जो काम करता है उसके अंदर उसको बहुत स्किल है, वो बहुत अच्छा जानकार है अपने फील्ड का, but he was fell in love with a painter's daughter. वो किसी कलाकार की लड़की के साथ वो अटैच होता है, and the father of the girl did not want his son-in-law of this profession. और जो लड़की के पिता होते हैं वो ये नहीं चाहते थे कि कोई
कोई ब्लैक स्मिथ उसकी बेटी से शादी करे. So he refused the proposal, and one day Quentin Matsys entered into the painter's storeroom where he painted his latest painting, and he made a fly over there. उसने क्या किया, वो जो उसके लड़की के पिता थे, लड़की के पिता का जो पेंटिंग वाला रूम था, वो उस पेंटिंग वाले रूम में जाता है और जो लेटेस्ट पेंटिंग होती है उसके ऊपर एक फ्लाई, कोई मक्खी ऐसे फ्लाई बना देता है. एंड and the painting was so real, the painting is so real that the father of the girl become surprised. He tried to fly the fly, वो कोशिश करता है कि वो उसको वहां से उड़ाए, but he feel the release of this painting. At last he called the Quentin Matsys and he accept his proposal, and Quentin married his beloved. और जब उसने वो मक्खी बनाई, वो इतनी रियल मक्खी कि जो उसकी जो पेंटिंग थी, उसके जो पिता जब वहां गए, उसने उसको उड़ाने की कोशिश की, वो मक्खी नहीं उड़ी. वो बिल्कुल उस चमत्कार को वो समझ गए. बाद में उन्होंने क्वेंटिन मैट्सिस को बुलाया और अपनी बेटी की शादी भी उससे कर दी. और जो ये क्वेंटिन मैट्सिस थे, वो आगे जाकर बहुत ही ज़्यादा फेमस पेंटर हुए. सो ऑल द अबॉय स्टोरी फ्रॉम द चाइना एंड फ्लैंडर्स, बोथ द स्टोरीज आर फ्रॉम चाइना एंड फ्लैंडर्स. ये दोनों तीनों जो कहानियां हैं चाइना और फ्लैंडर्स की है. एंड इलुस्ट्रेट व्हाट ईच फॉर्म ऑफ आर्ट इज ट्राइंग टू अचीव, कि किसी व्यक्ति की कला किस लेवल तक जा सकती है. सो दिस इज द एक्सप्लेनेशन ऑफ योर पार्ट 1. इन दिस पार्ट आई एक्सप्लेन यू द लैंडस्केप ऑफ सोल, एथिक्स एंड स्पिरिचुअल्स, जिसके अंदर मैंने आपको कला और स्पिरिट का जो तालमेल है वो आपको बताया. In a first story, I explained the Wudao. Second story about the Chinese story, and third story is about the blacksmith named Quentin Matsys. So now I am going to give you the 3 questions. What are the 3 questions which you have to reply me after this class? Your first question is, write about the lesson. Okay, you have to write about the lesson. आपको इस लेसन के बारे में लिखना है, जो कि मैंने आपको बताया था. It was divided into 2 parts. First part was so and so, and second part was in so and so. You have to also write the writer's name of both parts. Okay, this is your first question. Now your second question is, what is the story of, what was the story of Wu Daozi. ओके, आपको वो दाओजी जो मैंने आपको फर्स्ट स्टोरी बताई थी, जिसमें वो केव के अंदर चला जाता है, वो वाली कहानी आपको यहाँ पर बतानी है. एंड योर थर्ड क्वेश्चन इज, व्हाट इज द थीम, व्हाट इज द थीम ऑफ द लेसन. ओके, in this third question you have to explain both part 1 and part 2. मैंने आपको दोनों पार्ट की थीम एक्सप्लेन की है कि पार्ट 3 के अंदर क्या बताया गया है अबाउट द चाइनीज पेंटर, देयर वर्क एंड एज वेल एज द स्टोरी बिहाइंड इट. एंड द सेकंड पार्ट की थीम क्या है, सेकंड पार्ट की थीम के अंदर मैंने आपको यहाँ बताया था कि इट्स कॉन्सेप्ट इज आउटब्रेड एंड इट मीन्स द one who have no rights. So this is the theme of both part. If you have to answer these questions me after the class. If you have any problem, you can ask me. Till then, goodbye.